Good afternoon, students. Today I discuss about the chromatography, a instrumentation technique through which we can determine the separation of any organic compound, pigment, or any chemical substances. So, this is the definition about the chromatography. What is chromatography? Anybody? Are you telling me about the chromatography? No. So, this is the very simple definition about the chromatography. It is an analytical technique through which we can use for the separation of a mixture of chemical substances into its individual component. Suppose you can take any leaf. A leaf have a different components like chlorophyll, xanthophyll, and others components are also present. Through this technique, we can separate the exact xanthophyll and chlorophyll. This is the technique through which can determine the individual component which is analyzed by the chromatography instrument. Generally, this chromatography is based on the principle that is separation of different techniques, that is different affinities of the analytes towards the two things. First is stationary phase and second is the mobile phase. What is stationary phase? हम लोग बात करते हैं स्टेशनरी फेज एग्जैक्ट में है क्या। सपोज एक पेट्रिक डिश ले लेते हैं, उस डिश में हम वाटर को फिल कर देते हैं। यदि पेट्रिक डिश में वाटर को फिल कर रहे हैं तो जो सरफेस है आपका किसका, पेट्रिक डिश का, वो कैसा है, स्टेशनरी फेज, फिक्स्ड है। मोबाइल फेज क्या है, वाटर में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जिसमें इलेक्ट्रोलाइट मौजूद है वो एग्जैक्ट में क्या हो रहा है, मोबिलिटी हो रहा। डिफरेंट आपके एनालाइट्स, डिफरेंट आयंस मोबाइल कर रहा है विद इन द आपका सेपरेशन विद इन द केमिकल्स। सो activity depends upon the two factors or two properties. First is known as adsorption and second is known as solubility. What is absorption? Absorption किसे कहते हैं, हम लोग क्या बोलेंगे, when the concentration is increased on the surfactant of the surface is known as adsorption. यदि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसी सरफेक्टेंट में एब्जॉर्ब नहीं हो रहे हैं और उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज कर रहे हैं, दैट इज कंसंट्रेशन इज इंक्रीजेस नाउ, दैट वर्ड इज नोन एज एडजॉर्प्शन। उसको क्या बोलते हैं, एडजॉर्प्शन कहते हैं। सॉल्युबिलिटी क्या है, हम सॉल्युबिलिटी बोलेंगे कि आपका कैसा है, डिसॉल्व ऑफ एनी केमिकल सब्सटेंसेस इन एनी सॉल्वेंट is known as solubility. So solubility हम लोग बोलेंगे component mixture dissolved in the mobile phase is known as solubility. And again I repeat, adsorption, component of mixture sticks on the stationary phase is known as adsorption. So these two are dependent upon the two factors. If the higher adsorption is occur, then the slower is the molecule we have moved through the column. And second is known as higher the solubility, then mobile phase, faster the molecule will move through the column. These are the two things through which we can determine the main principle of the chromatography. So, what are the main principles of the chromatography as per your definition present in your book? The principle involved is partition chromatography.
where in the substance are distributed or partitioned between liquid phase. One phase is water, that is liquid phase, which is held in the pores of filter paper, and the second phase is known as mobile phase, which moves over on the surface of the paper. The components or the compounds present in the components in a mixture get separated due to difference in their affinity towards water over mobile phase. So, thus the paper chromatography works on the principle of partition chromatography. The other method is experimental method. This is the experimental method. In experimental method, first of all, we can selection of suitable types of development. हम लोग क्या करते हैं? Suitable type of development करते हैं solvent का. For example, amino acid का हम separation करेंगे. उसके लिए कौन सा solvent लेते हैं? Acetic acid 30%, ethyl alcohol or water mixture. This is the solvent for the separation techniques of paper chromatography for the separation of different types of amino acid present in your body. So first you can select the suitable development like mixture, solvent, paper, like 1.42 filter paper. This is the example of an paper. The second is suitable filter paper whose pore size is very small, like 0.25 micrometer to near about 0.50 micrometer. Third is preparation of sample. How to prepare the sample? So you can dissolve the sample in a suitable solvent. Fourth is spotting of the sample on paper using a capillary tube, and fifth is development of chromatogram. Like we can use chromatogram here, the neon hydrogen solvent. Neon hydrogen solvent we can use as a spray. Here is last is drying of the paper. Here is a sample. हम लोग क्या करते हैं? पेट्रिक डिश ले रहे हैं. इस पेट्रिक डिश में सॉल्वेंट को फिलअप कर दे रहे हैं. सॉल्वेंट कैसा है? एसिटिक एसिड, इथाइल अल्कोहल और आपका वाटर मिक्सचर. इसमें कैपिलरी बना दे रहे हैं और कैपिलरी में आप क्या करते हैं? 1.42 फिल्टर पेपर और 41 फिल्टर पेपर को आपका सेंटर में डिप कर रहे हैं और 1 ड्रॉप ऑफ द सॉल्वेंट यहाँ पर डाल देते हैं. आफ्टर हाफ एन आवर यहाँ पर क्या होता है? सॉल्वेंट माइग्रेट कर रहा इन अपवर्ड डायरेक्शन और स्प्रेड आउट ओवर ऑल द होल पेपर. ये एग्जांपल है कि आपका सेंटर में सैंपल डाले हैं, ये फिल्टर पेपर आप यूज कर रहे हैं और सॉल्वेंट फ्रंट में है और ये डिस्टेंस टेबल बाय द सॉल्वेंट, डिस्टेंस टेबल बाय द कंपोनेंट. If we take an example, बीकर, यदि हम बीकर ले रहे हैं, बीकर में एक फिल्टर पेपर यूज कर रहे हैं और फिल्टर पेपर में आप एक ड्रॉप जो है एमिनो एसिड या पालक भाजी का डालते हैं और फिर सॉल्वेंट में डिप कर रहे हैं, तो ये या तो एसेंडिंग ऑर्डर में इंक्रीज करेगा सॉल्वेंट या डिसेंडिंग ऑर्डर में आपका डिक्रीज करेगा. इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर. And we can got the spot of the different chlorophyll, xanthophyll and different components which is separated through this technique. And finally हम लोग क्या करते हैं? रेडिएशन फैक्टर को निकाल लें denoted by the symbol RF. RF क्या होता है? रेडिएशन फैक्टर having the formula distance traveled by the component and distance traveled by the solvent. दोनों को रेशियो निकाल लेंगे तो हमको क्या मिल जाता है? रेडिएशन फैक्टर्स का वैल्यू को निकाल लेते हैं. लास्ट इज द एप्लीकेशन. व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ chromatography? There are several applications
of chromatography. First is separation of mixtures having polar or non-polar compounds. Like you can take any chemicals having polar in nature and non-polar in nature. Second is separation of amino acid. Like in human body, 21 amino acid is separated through these techniques. Third is determination of organic compounds and biochemicals component present in human urine, which is also separated through these techniques. And last is evaluation of inorganic compound like salt or inorganic complexes. These are the application of chromatography. Any question? Have you understand? Okay. Thank you.